Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV's Prime Time. India and New Zealand signed a historic free trade agreement on Monday, April 27th. The agreement was inked after terms from New Delhi and Wellington completed negotiations in December 2025. The agreement covers 20 chapters including trade in goods, remedies, dispute settlement, legal provisions and more. The signed FTA will be reviewed by the Parliament's Foreign Affairs, Defence and Trade Committee FADTCE in New Zealand. Following a national interest analysis which includes a public consultation, the committee will submit its report to Parliament for ratification. The process is expected to take at least 6 months. Following the signing of FTA, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the deal between India and New Zealand was concluded in 9 months, adding that the pace reflects depth of trust and shared ambition between the nations. Today, the Indian Ocean feels a little smaller, and the bond between two big democracies feels a great deal stronger. We meet at a time when the world economy is being recast, the lines are being redrawn, nations are choosing their partners, different countries are crafting the journey ahead. In this changing world, India and New Zealand have chosen each other. Ours is a friendship rooted in shared democratic values, rule of law, love for enterprise, and of course, cricket. We stand here to write a new chapter, one that our farmers, youth, innovators, and industries will read for decades. Launched on 16th March last year, the India-New Zealand Free Trade Agreement has been concluded in a record 9 months, a pace that reflects the depth of trust, commitment, and shared ambition between our two nations. The signing of this FTA today marks another defining milestone in India's engagement with the developed world and brings us closer to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047, that is, a developed and prosperous India when we celebrate 100 years of independence in 2047. With this FTA, it is the 7th free trade agreement that I'm signing in the last 3.5 years. 2 more to go very soon in the next few months with the European Union and the United States of America. And we would have had 9 free trade agreements with 38 advanced economies, together opening doors to nearly 2/3 of global trade, nearly 65–70% of global GDP, and New Zealand adds vital strength to that arc of opportunity. This FTA is far more than an agreement on tariffs and rules of origin. It is a comprehensive framework spanning market access, agri-productivity, investment and mobility, designed to benefit manufacturing, farmers, artisans, MSMEs, women entrepreneurs, students and skilled professionals across. Ladakh Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena on April 27 announced the creation of 5 new districts in the Union Territory, calling it a historic day for the region. With the creation of 5 new districts, Nubra, Sham, Changtang, Zanskar and Dras, Ladakh will now have 7 districts from the existing 2 Leh and Kargil. In a post on X, the LG said
He had approved a notification for the formation of 5 districts, fulfilling a long-pending demand of the people. With the creation of the 5 new districts, Nubra, Sham, Changtang, Zanskar and Dras, Ladakh will now have 7 districts from the existing 2, Leh and Kargil. He said the move aligns with the vision of Prime Minister Narendra Modi for a developed and prosperous Ladakh. The decision had earlier received approval from the Ministry of Home Affairs in August 2024. LG Saxena said the creation of new districts would strengthen grassroots governance, decentralize administration and ensure faster delivery of public services, particularly in remote and far-flung areas. This transformation decision, already approved by the Ministry of Home Affairs in August 2024 under the leadership of Minister of Home Affairs Amit Shah, would strengthen grassroots governance and also decentralize the administration and ensure faster delivery, especially in the remote and far-flung areas. He also said that this would also open up new opportunities for growth, employment, entrepreneurship, bringing governance closer to the people and contribute to the overall development of the region. Ladakh, the largest union territory in terms of area but the second least populous. It has an expanse of 86,904 square kilometers bordering China and Pakistan, with a population of 2.74 lakh according to the 2011 census. The centre bifurcated the erstwhile state of Jammu and Kashmir into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, on August 5, 2019, when it also abrogated Article 370 of the Constitution that gave special status to the erstwhile state. After being declared a union territory, Ladakh came under the direct administrative control of the Union Home Ministry. Prime Minister Narendra Modi on Monday held a roadshow in Gangtok and was warmly welcomed by people who enthusiastically cheered and waved as his convoy made its way through the city. The Prime Minister is on a 2-day visit to the state, during which he will take part in the closing ceremony of Sikkim's 58th year of statehood celebration. The Prime Minister will visit the Orchidarium in the Gangtok on Tuesday morning to showcase the ecological and floral heritage of the state. Swana Jayanti Maitri Manjari Park has been developed as a state-of-the-art world-class orchid experience center. बिल्कुल पराक्रम आप देखिए कि सिक्किम की वेशभूषा में आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और अभिनंदन के लिए अति उत्साहित है। यहाँ के जो स्थानीय जो गायन है, स्थानीय जो लोक कला है, उसका प्रदर्शन करते हुए, और आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं अभिवादन स्वीकार करने का। और आप देखिए कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है गंगटोक की सड़कों पर, उत्साह बढ़ता ही जा रहा है लोगों में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने का जिन्हें मौका मिला है वो काफी प्रसन्नचित्त है, प्रफुल्लित है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को इतने नजदीक पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी अगुवाई में आज उत्तर पूर्व तेजी से विकास रहा है, जिनकी अगुवाई में सिक्किम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिनकी अगुवाई में हम देख रहे हैं गंगटोक पे तमाम विकास परियोजनाएं धरातल पर आकार ले चुकी हैं और इस दौरे के दौरान भी नए तोहफे मिलने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर वो उत्साह दिखता है, वो प्रेम दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, वो अपनत्व दिखता है, वो भरोसा दिखता है कि सिक्किम उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, लिविंग हेलीपैड से लोक भवन तक ये रोड शो होना है और इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि 4000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की जो सौगात है वो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो समर्पित करेंगे। जब आप किसी क्षेत्र को आप विकास की पराकाष्ठा पर लेकर के जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी लोकप्रियता और आपकी स्वीकार्यता है वो ज्यादा बढ़ती है और उसी का जो प्रदर्शन है इस रोड शो में हम देख रहे हैं। ऋषि, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री को देखें तो वो जनता से सीधे संवाद के इस तरीके को जिस तरीके Modi will participate in the closing ceremony of Sikkim's 58th year of statehood celebration at Paljo Stadium, where he will inaugurate, launch and lay the foundation stone of multiple development projects worth ₹4,000 crore across the state. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. These projects span a wide range of sectors including infrastructure, connectivity, healthcare, education, power, urban development, environment, tourism and agriculture, and are aimed at accelerating holistic and inclusive development in Sikkim.
Time for a short break. Stay tuned. Do you really know what you're eating? Not all eggs are the same. Choose Junaki eggs you can trust. At Junaki, quality begins at the source. Fresh, safe, and perfect for your family. Every Junaki egg is lab tested for safety and problem harmful bacteria. Bring home the nutrition your family truly deserves. संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से प्रदेश में वंचितों, दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार की समावेशी नीति से आज प्रदेश के करोड़ों वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। प्रदेश के 75 जनपदों में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य किया जाएगा। वंचितों की उन्नति का आधार डबल इंजन सरकार। Former Israeli Prime Minister Naftali Bennett and Yair Lapid on Sunday announced the merger of their political parties into a new unified formation titled Together, led by Bennett, in a move aimed at unseating Prime Minister Benjamin Netanyahu in the upcoming elections. The agreement between the two leaders was finalized on Saturday evening, with both sides confirming that their respective parties, Yesh Atid and Bennett 2026, will contest the elections as a single list. The elections are scheduled to take place on later than October, and the merger is expected to reshape Israel's political landscape by consolidating the opposition bloc. The newly formed bloc has made it clear that it will now only partner with Zionist opposition parties and will not form a coalition with Arab parties. אחרי 30 שנה של נתניהו הגיע הזמן להיפרד ממנו ולקחת את המדינה לדף החדש. Meanwhile, the scheduled resumption of Prime Minister Benjamin Netanyahu testimony in his ongoing criminal trial has been abandoned. The proceedings were expected to restart today following a 2-month break necessitated by the conflict with Iran. The sudden suspension of the legal session reportedly follows the submission of specific security concerns by Netanyahu's legal representative, Amit Haddad. While the court had prepared for the high-profile testimony to proceed, the Times of Israel noted that no further details are immediately available regarding the nature of security risks of the duration of their latest postponement. Police in Cachar on Monday arrested 5 individuals in connection with an alleged Indian Premier League gambling operation acting on specific intelligence inputs. The operation, initially led by Samir Aziz, whose interrogation helped police track down 4 more suspects: Saib Hussain Laskar, Zahir Hussain Laskar, Rajat Kumar Singh and Aftab Laskar. According to officials, the police team seized cash amounting to Rs 80,230, 7 Android mobile phones, a notebook containing IPL betting records, and 4 sheets with detailed gambling calculations. Briefing the media, Additional Superintendent of Police Crime Rajat Kumar Pal said that all the accused were produced before the court on Monday. Further investigation into the matter is underway. को मालूम है कि सिलचर एरिया में हमें काफ़ी दिनों से कंप्लेन आ रहा था कि आईपीएल में काफ़ी बैटिंग रिगार्डिंग कंप्लेंट्स हमको मिल ही रहा था, तो इसके रिगार्डिंग हमने एक टीम बनाया और वो टीम जो कई दिनों से ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा के और टेक्निकल इंटेलिजेंस लगा के कुछ लोगों को ट्रैक कर रहा था। और जैसे ही हमें जो इनपुट हमारा जब हमें एग्जैक्ट मिला
कि कौन लोग हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो कल हमने एक रेड कंडक्ट करी, एक स्पेशल टीम बना के, और उसके ज़रिए जब हमने एक आदमी को उठाया गया जिसके पास से कुछ एविडेंस मिले, मोबाइल में मिला जो कि जुआ वगैरह खेलता है, और उसने जब और व्यक्तियों के नाम बताए गए तो हमने उन व्यक्तियों को भी उठाया। तो हमें ये कुछ व्यक्ति एक जगह पर मिले जो जुआ खेल भी रहे थे और वो फ़ोन के ज़रिए अलग अलग लोगों से जुआ खिलवा रहे थे, और उनके पास में हमें 80,000 से ज़्यादा कैश भी बरामद हुआ है, और साथ में टोटल हमने 7 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन सीज़ किए हैं, और 5 लोग हमने गिरफ़्तार किए हैं। उन लोग के नाम हैं सैबुल हुसैन लश्कर, ज़ाहिर हुसैन लश्कर, रजत कुमार सिंह और आफ्ताब लश्कर, और एक और आदमी है जिसका नाम समीर अजीज़। इन 5 लोग को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अंडर केस नंबर है 387/2026 सिलचर थाना PS, और ये 5 लोग को आज कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाएगा। और आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये लोग किसके लिए खेलते हैं और बड़ा नेटवर्क अगर कोई है तो ये लोग दूसरे स्टेट में भी लिंक है कि नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लिंक है या नहीं, वो सब अभी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज निकाले जाएंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन आगे मिलेगी हम आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद। We'll now take a short break. Stay tuned. Ajipara tel olop komti tel ghee aro butter to moi khan bishi chulai itu khan health karne important ase holibi itu bishi chulai le obesity, non communicable diseases para ula bimar, high blood pressure, diabetes aro kishim heart diseases dure. Holibi balanced diet maintain kurigena khali 25% calories, fats aro oil consume kuribi itu bimar khan na pawo. Moinate ekta hissa para tel, ghee, butter kinibi aro itu khan kiman aro kinika chulaise sabi. Bhat sabji paka time de aste aste tel komti chulawi aro tel laga bottle para nadhali kena chamuch para dhalibi. Fried bhat sabji para to boiled, grilled nohole steamed bhat sabji khawi. Vanaspati aro bakery products komti khawi. अपनी लगा हेल्थी लाइफ करने तेल और फैट्स कंजम्पशन तो कमती करीबी। Issued in public interest by Food Safety Nagaland Department of Health and Family Welfare. Twenty-four newly elected members of District Council from the Tripura Motor Party were sworn in at Kumulwang on Monday, marking the formal beginning of the new Tripura Tribal Area Autonomous District Council. The oath-taking ceremony was attended by Tripura Motor founder Pradyot Kishore Debarma, Party President B.K. Rangwal, ministers, MLAs and senior party leaders. The BJP's 4 elected MDCs boycotted the ceremony, reiterating their protest over alleged irregularities in a recent recruitment process for 120 posts under the council. हमें त्रिपुरा को असल में आगे ले जाना है तो हम सबको मिलके एक संग काम करना पड़ेगा और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जहां में हम नेता का बात कम और लोगों का बारे में ज़्यादा बात करें। वही मेरा मैसेज होगा। अगर हमें त्रिपुरा को आगे ले जाना है तो थिंकिंग बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा और एक ऐसा त्रिपुरा को हमको आगे ले जाना है जो अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में चिंता करें। आपने सर बहुत कुछ रिफॉर्म्स की बात की है जी, तो अगले दिन कैसे काम करेंगे? हम इसका काम मैंने अभी से शुरू कर दिया है और आप आने वाले 10-15 दिन में इसका बहुत असर भी देखेंगे। कौन सी चीज़ की प्रायोरिटी? एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो मैं एक सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहता हूँ जहाँ में जो लोग पॉलिटिक्स नहीं भी है लेकिन उनके पास शिक्षा, नॉलेज और एक सोच है, उनको भी मैं कैसे EDC में My sincere thanks and congratulations to all the honorable members on completion of the oath-taking ceremony. I also convey thanks to all the officers for their cooperation in successfully organizing the oath-taking ceremony. Now, I would like to announce
that under Rule 17.1711/1, Honorable Governor of Tripura is pleased to appoint Sri Jagdish Devarma, elected MDC, to preside over the proceedings of the first meeting of the newly elected council. I call upon Honorable Member Sri Jagdish Devarma to take his chair to preside over the first meeting and advance the further proceedings. Thank you. Mushan Jagadish Devarma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Adong Ungi, Tongzakma Yaguro, Ishmani Munti Sumaitani, Sadao, Trakhe Putu Narugui, Sumaitani Sadao, Baro, Elembakmi, Bishimti, Kazak, Yaramno, Putu Kubui, Havak Gomi, Anu, Bokzagi Tomani, Samuno, Kabai, Kubai, Tangai. I, Sri Chandra Kumar Jamatya, having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Sri Kamal Koloy, having been elected a member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Mr. Junior Devarma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Adong Ungi, Tongzakma Yaguro, Kaitoni Sumai Tangai, Hazavo, Virakhe Poito, Naragai Sumai Tangai Hazavo, Baro, Elembagni Bishimti, Hazak Kerono, Poito Kubui, Horobomui, Ano Boksagri, Ongmanu Samuno, Abai Kubai, Tangai, Abai. Muchan Buddha Kumar Devarma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Adong Ungi, Tongzakma Yaguro, Kaitoni Sumai Tangai, Hazaro, Virakhe Poito Naragai, Sumai Tangai, Hazaro, Baro Elembagni Bishimti, Hazak Kerono, Poito Kubui, Hornbill, Anu, Boksagri, Ongmanu Samuno, Kabai Kubai, Tangai. Addressing reporters after the event, Pradyot said youth welfare, healthcare, education and employment must remain top priorities for the progress of Tripura and the country. Pradyot stressed that Tripura's overall development was closely linked to the progress of the TTAADC areas. Following the swearing-in ceremony, the first meeting of the newly elected council was held under the chairmanship of senior leader Jagdish Devarma. Sources in the party said the names of the new chairman, chief executive member and executive members are likely to be announced soon, with a possible reshuffle in the council leadership. In a joint operation, the Border Security Force and Tripura Police seized a significant quantity of narcotics along the India-Bangladesh border in Tripura Sipahijala district. Acting on intelligence input, teams from the BSF's 81 Battalion and Sonamura Police conducted late-night raids at multiple locations under the Sonamura subdivision. The operation led to the recovery of 33 kg of dry ganja, 130 bottles of banned cough syrup and 4,000 yaba tablets. Officials believe the contraband was hidden in forested areas near the border and was intended for smuggling into Bangladesh. Timely action by security forces is said to have thwarted the trafficking attempt. According to Sonamura Police Station Officer in charge Tapas Das, the seized items are now valued approximately 8.5 lakh. An investigation is underway to identify those involved in the smuggling network. আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে শ্রীমন্তপুর, দুর্গাপুর, এনসিনগর এবং
আছে ওইখানে পেট্রোলিং এর সময় নার্কোটিক্স ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হয়, যা টোটাল গাঁজা পাওয়া যায় 33 কিলো এবং অ্যাসকো পাওয়া যায় 130 বোতল এবং ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায় 4000-এর মতো কোয়ান্টিটি। তো এগুলি সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি সিজ করা হয় এবং আমাদের সোনামুড়া থানাতে জিডিএফজি করা এবং আমরা একটা অলরেডি এনকোয়ারি স্টার্ট করে দিয়েছি যে এগুলার এই যে ড্রাগস পিছনে মানে কে বা কারা যুক্ত আছে, তো আমরা তাদের আইডেন্টিফাই করে আমরা তাদের আইনের আওতায় অবশ্যই আনবো এবং এটার যে আনুমানিক কালোবাজার মূল্য যা ডেস্টিনেশন প্রাইস টোটাল 1.5 লাখ টাকার আশেপাশে হবে। তো আমরা দেখছি যে এটার পিছনে কে বা কারা যুক্ত আছে এবং তাদের আইডেন্টিফাই করে অবশ্যই আমরা তাদের আইনের আওতায় আনবো। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV. The Jawaharlal Nehru National Solar Mission, or the National Solar Mission, was launched on 11th January